हेलो गाइस, वेलकम टू दी इंजीनियर्स क्लाउड। गूगल क्लाउड एक नया चैलेंज लाया है जो कि है 30 डेज़ ऑफ गूगल क्लाउड। इसका एनरोलमेंट अब स्टार्ट हो चुका है। इस 30 डेज़ ऑफ गूगल क्लाउड क्यों करा रहा है गूगल? तो गूगल एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है कि आप अपना करियर किक स्टार्ट कर सकते हैं गूगल क्लाउड में और अलग अलग टूल्स के बारे में सीख सकते हैं। इसमें आप सीख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग यूजिंग क्लाउड। और अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो आपके पास अपने कैंपस फैसिलिटेटर होंगे। आपको इस प्रोग्राम में एनरोल क्यों करना चाहिए? इसमें आपको मिलेंगे स्किल बैचेस जो कि आप अपने रिज्यूमे में, लिंक्डइन पे आप अपडेट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल और अच्छी बनेगी। एंड एक्साइटिंग गुडीज़ भी मिलेगी आपको, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, टी शर्ट, बैग, सिपर एंड कूल स्टिकर्स फॉर योर लैपटॉप। इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे क्या? तो इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे, इसमें 2 ट्रैक्स है। एक ट्रैक है क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक्स, जिसके अंदर ये 6 स्किल बैचेस है, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड सेकेंड ट्रैक है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग ट्रैक। इसके अंदर भी 6 स्किल बैचेस हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इस फॉर्म को फिल कैसे करना है? इस फॉर्म को फिल करना है, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, एनरोल इन दी प्रोग्राम। इस साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप उस पर जा सकते हैं। यहाँ हम गए एनरोल इन दी प्रोग्राम लिंक पे। देन वापस यहाँ पे एनरोल नाउ पे करना पड़ेगा हमें, एनरोल इन दी प्रोग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ एक गूगल फॉर्म खुल चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ प्रोग्राम के बारे में सब कुछ लिखा है। देन यह गुडीज़ की फ़ोटो में बनी है। ऑब्वियसली ये एक्चुअल साइज़ डिफ़र करेगी इसमें। नेक्स्ट किया हमने। देन यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आप पढ़ लें कि क्या क्या है इसमें। एंड आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मेक श्योर दैट। देन इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, येस आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। When you will decline, you will not get proceed in it, so make sure that. Now your full name here, you can just put your name here. Next, your email ID. Yeah, make sure that you are using that email ID that from which you have your QuickLab account, nor you will not get its subscription and you will not be eligible for the program. So make sure that it's a QuickLab ID and you have put your profile, QuickLab profile public. Now you have to complete your mail ID here. Then its gender, you can select your gender. Then you select your institution name. If your institution is here in it, then you can fill it. Now you can select Purnima College of Engineering in the last. Like I can select Purnima College of Engineering. And if you're selecting Purnima College of Engineering, then I am putting Discord link below in the description. Make sure to join it. If you have any doubt, you can ask at Discord server. Next year of graduation, that is 2024. And then do you have access to working internet connection and a laptop with latest Chrome browser? That you have to fill yes. And now do you have an account on QuickLab? So if you don't have, just go here and just like right top click on it at join and just fill on your details and confirm your account, and your account is ready. And then you have to visit you have to take a QuickLab tour there and then make your profile public. And after you making your profile public, your profile will look like something like this, where it will be written that your profile is public and accessible at this link. That's it. Yes, I have already, and we have to proceed in it. Then in the next step,
You can see here, create a QuickLab account with a different email. Here it's written everything, every rule, so you can read it and proceed according to it. So like if you have made your QuickLab account, you have to I verify, and next, then you have to some last steps. Just they are saying how to make your profile public, so follow these steps to make your profile public. I can even zoom on it so you can take a snap. Then next, yep, you are here, you have to put your QuickLab public profile link. Like this is my profile, so your profile is accessible at, so I have to put this link, bottom two lines, so you have to put this link, and then I acknowledge, and near about in 24 hours you will get a mail in your snap, and you will see there will be an SS code which you have to put in the link there. So go and enroll in the program as soon as possible. Yeah, thank you, and do not forget to like, share and subscribe, and all the links are in the description, so make sure to join.